I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible clearly, please let me know in the comment box. So today we'll discuss the next part of your volumetric analysis. Right? What we have seen these things. We have seen the introduction. We have seen the what is meant by pharmaceutical analysis. What are the types of determination? Then analytical methods divided into mainly two types: traditional method or classical method, and in that gravimetry, titrimetry, volumetry. After that, instrumental method. In that you have electrochemical methods, optical methods, chromatographic methods, thermal methods, and other methods. We have already discussed about it. After that, what do you mean by titrimetry? And also I have told you few important terms like a titrant equivalence point, right? Okay, good evening Rahul Das, good evening. We have seen what do you mean by equivalence point. Equivalence point is the also known as an end point. Equivalence point को अपन end point बोलते हैं, the point at which there is a change in the pH, or the point at which there is a completion of reaction, that is known as the equivalence point. We have seen the condition for titrimetric analysis. We have seen the few terms like what is the formality, what is molarity, nullarity, what is the molality, molality, formality, normality. We have seen, okay. Then after that, we have seen the few examples of molecules and their molecular weight, right? After that, we have seen the primary standards, secondary standards, and tertiary standards. So primary, secondary, and tertiary standards. We have seen this. That is important for GPAT. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड what are the secondary standards, tertiary standards. So that part is important for GPAT. ये important है प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड टर्शियरी स्टैंडर्ड GPAT के लिए, है ना. तो आपको एग्जाम्पल याद ही रखना पड़ेगा उसका, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सीन indicators. So indicators means what? So indicator is the kind of compound which will show you the end point, which will show you the color change at a equivalence point, है ना, which will show you color change at a equivalence point. So one color indicator, two color indicators, then mixed indicator. We have also seen the indicator theories. According to Oswald theory, so indicator will change the color depending upon the ionization, है ना. जैसे अगर इंडिकेटर क्या होते हैं, मोस्टली वीक एसिड एंड वीक बेसिस होते हैं. तो अगर वीक एसिड में आएगा तो अनआयनाइज रहेगा, तो उसका कलर अलग रहेगा. जब बेस में जाएगा तो आयनाइज हो जाएगा, उसका कलर अलग रहेगा, है ना. सो वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके. सो वन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड इंडिकेटर इज द phenolphthalein. And remember, phenolphthalein is the most commonly used indicator in case of volume, in case of acid base titration. So weak acid indicator is nothing but phenolphthalein, and a weak base indicator is nothing but the methyl orange. Methyl orange is the weak basic indicator, phenolphthalein is a weak acidic indicator. After that, we have seen the quinonoid theory. According to that, in an acidic medium, the indicator will have different structure, and in case of basic medium, indicator will have different structure. In case of acidic medium, this is, for example, phenolphthalein will have a benzoid structure which is colorless, and in case of basic medium will have a quinonoid structure which is a pink in color. That's why color change. So basically theories of indicator indicate you the mechanism of color change of indicator, ठीक है. उसके बाद में I have already explained you, this is a benzoid
this is a quinonoid. So example, phenolphthalein, how it will change the structure according to the quinonoid theory. So phenolphthalein in an acid medium will remain as a enol form, ये यहाँ पे OH जो है enol form है. एंड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, जैसे आपका टाइट्रेशन चालू है, तो जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन होकर बेसिक मीडियम में जाता है ना, जैसे यहाँ पे इसमें क्या है कि एसिड है, इसमें क्या है बेस है, बेस आप यहाँ से ऐड कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो एसिड जब न्यूट्रलाइज होगा, जब एसिड है इसमें फिनोप्थेलिन है, एसिड है मतलब उस टाइम पे फिनोप्थेलिन कलरलेस है. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज अ बेंजोइड फॉर्म ऑफ फिनोप्थेलिन. ओके, जैसे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है और जैसे यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीशन होता है, राइट, तो क्या होगा, यहाँ का पीएच चेंज होगा, मतलब बेसिक मीडियम जाएगा पीएच. तो फिनोप्थेलिन विल बी कन्वर्टेड टू दिस क्विनोनॉइड फॉर्म व्हिच हैज अ पिंक कलर. दैट्स व्हाई द थ्योरी एक्सप्लेन्स why there is a color change, right? We have seen. Now next part, types of titrations. So they are classified based upon the measurement of either weight or volume. कि आप क्या weight measure कर रहे हो. If you are measuring a volume of titrant, अगर आप titrant जो है उसका volume measure कर रहे हो, known as a volumetric, है ना, known as a volumetric titration. And if you are measuring the weight of titrant, है ना, if you are measuring the weight of titrant, so that is known as a gravimetry, है ना. तो अगर आप titrant का वॉल्यूम मेजर करो, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो चुका है रिएक्शन के लिए, if you are measuring the volume of titrant consumed in the reaction, or that is known as a volumetry. And if you are measuring the weight of titrant, so that is known as a gravimetry. So types of titration depending on the measurement of volume or weight. Okay, now based upon the nature of titrant, कि nature क्या है उसका, acidic basic, based upon the nature of titrant. तो again टाइट्रन का नेचर क्या है कि, है ना, कि एसिडिक है, बेसिक है, उसके बेसिस के ऊपर अल्की, है ना, एसिडिमेट्री, अल्कलीमेट्री. एंड बेस्ड अपॉन द नेचर अगेन वेदर इट इज एक्वियस और नॉन एक्वियस. टाइट्रन का सोल्यूशन किसमें बनाया, टाइट्रन सोल्यूशन इज मेड इन द वाटर, so it is known as aqueous. Titration of sample by using aqueous titrant. जैसे मान लीजिए 0.5 मोलार, है ना, 0.5 मोलार HCl, 0.5 मोलार HCl कैसे बनाते हो आप, HCl का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 37, है ना, तो 37 ml HCl in a 1 liter, that will give you 1 molar. तो एक तो आप 37 ml in a 2 liter कर सकते हो, या फिर 37 का 50%, मतलब 18.5 in a 1000 ml, that will give you 0.5 molar. तो but किस में, वाटर में. So that's why solution is the solvent is a water. So aqueous titrations, here there is a involvement of water as a solvent, है ना. तो titration of sample by using aqueous titrant. तो titrant का solution किस में है, वाटर में है, तो that is known as a aqueous titration. नॉन एक्वियस टाइट्रेशन मतलब क्या है, टाइट्रेंट इज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर. टाइट्रेशन ऑफ सैंपल बाय नॉन एक्वियस टाइट्रेंट. तो नॉन एक्वियस टाइट्रेंट, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, उसको नॉन एक्वियस टाइट्रेशन बोलते हैं अपन, राइट. तो अगेन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन, है ना, कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, अगर टाइट्रेंट इज एसिड और बेस and titrant is a respective conjugate acid or base. तो titration of acidic और basic component, अगर जो titrant है वो एसिड है या फिर बेस है, अगर वो एसिड होगा तो titrant क्या होगा, बेस होगा. अगर titrant बेस है तो titrant एसिड होगा, है ना. तो इन दैट केस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन.
टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट बाय इट्स कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, है ना। एग्जांपल क्या है, टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH। HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। तो इन दोनों का टाइट्रेशन जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन आता है। लाइकवाइज दैट, है ना, टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज आल्सो one of the acid base titration. Now, okay, depending on the depending upon the principle involved, acid base neutralization reaction, right? Then, है ना, इसमें एग्जांपल और भी देखो, H is nothing but the acid, OH nothing but the base, तो रिएक्शन हो गए, क्या बनेगा, H2O, right? Likewise that NaOH is the base, HCl is acid, right? So NaCl will be the salt and water will be generated, so known as a acid base titration, or an acid base titration, because one is acid, one is a base. Okay. Now next is a right? So reactions of hydrogen and OH to form H2O is the basis of all acid base reaction. So acid base reaction में क्या है, one compound will give you OH, one compound will give you H, and H plus OH will combine to form a HCl, and remaining will be the salt. That is the basis of aqueous or acid base titration. So free base or acid will be neutralized by its subsequent acid or base. जो free acid और base है उसका neutralization कौन करेगा, its subsequent acid or base, known as acid base titration. Now based upon that acidimetry and alkalimetry, there are two terms. Acidimetry मतलब क्या, acidimetry मतलब क्या, तो titration of free bases or salt of weak acid with the strong acid, acidimetry, है ना, measurement of acid, कितना acid लग रहा है neutralization के लिए, that is a acidimetry, है ना। The term acidimetry मतलब क्या है, acid मतलब आपको मालूम है acid, मेट्री मतलब मेजरमेंट, एसिड का मेजरमेंट कर रहे हो आप, तो एसिड किसके, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ओके। जैसे मान लीजिए NaOH एंड HCl, ये जो रिएक्शन है ना, NaOH में HCl क्या है, एसिड है, और OH क्या है, बेस है ना। तो H प्लस वो आगा, वो देगा आपको H प्लस एसिड, OH माइनस बेस देगा, है ना। तो उसका कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, है ना। तो अभी ये यहाँ पे क्या होगा, ये है होगा कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस NH, है ना। जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, उसके अपोजिट जो रहेगा उसको, या फिर जो सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिडिमेट्री मतलब टाइट्रेशन ऑफ फ्री बेसिस और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एसिड इज देयर, तो एसिडिमेट्री। इसके अपोजिट अल्कलीमेट्री रहेगा, तो टाइट्रेशन ऑफ फ्री एसिड्स और सॉल्ट ऑफ वीक बेसिस विद स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कलीमेट्री। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है, इसका pH कितना होगा, 1 से लेके 3 तक। स्ट्रॉन्ग एसिड 1 to 3, है ना। नाउ वीक एसिड, वीक एसिड pH कितना रहेगा, 3 to 7। strong acid pH is a 1 to 3, weak acid pH is a 3 to 7। तो likewise that अगर strong base रहेगा, strong base रहेगा तो उसका pH करेगा, strong base का pH होगा more than strong base, अगर strong base है यहाँ पे लिखता हूँ मैं strong base,
pH will be 11 to 14. 11 to 14. वीक बेस क्या होगा? वीक बेस का पीएच कितना रहेगा? तो 7 to 10, 7 to 10 और 7 to 11. Right? So depending on that weak acid, weak bases. Okay? So acidimetry, alkalimetry. Acidimetry means measurement of acid. Alkalimetry means measurement of base. In acidimetry, titration of free bases or salt of weak acid with its conjugate acid, with the strong acid, है ना. एंड अल्कलीमेट्री मतलब क्या है? तो टाइट्रेशन ऑफ फ्री एसिड्स और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स, वीक बेसिस विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज अल्कलीमेट्री. नाउ और एक टाइट्रेशन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन. तो बेस्ड अपॉन द, है ना, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, gaining and loosening of electron. So oxidation is a gaining of electron, reduction is a losing of electrons. Based upon the oxidation reaction or on the basis of oxidizing and reducing agent. यहाँ पे reaction involve क्या रहेगा? Oxidation reaction. So permanganate titrations, they are most commonly done in the oxidation reduction titration. So it is also known as the redox titration. So short form में redox बोलते हैं. Redox titration based upon the oxidation reduction reaction. So permanganate titration is there. Then iodimetry, and serial of the titrations. So change in the oxidation state or transfer of electron by reactant by using either oxidizing or reducing. So redox titration होता है. It means based upon the principle. एक तो aqueous होगा titration, non aqueous titration, है ना. Then oxidation reduction or redox titration based upon the change in the oxidation state or by gaining or losing of electron. These are the oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Then again type of titration में आएगा अपन next, है ना. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस, है ना, द एजेंट विच विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, है ना. तो यहाँ पे आयोडीन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडाइज्ड क्लोरीन. तो ऑल दे आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सम आर द रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कौन से? सोडियम थायोसल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद में अमोनियम, आयरन सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, they are known as a reducing agent. Gaining and loosening of electrons, that is oxidation reduction reaction. Just understand the type of reaction. यहाँ पे सिर्फ type of, because we have whole chapter on this oxidation reaction type. मैं properly आपको वो भी समझाऊँ. Now third, complexometric titration, formation of complex. The reaction is based upon the formation of complex. Complexometric titration में क्या है? There is a formation of complex. Titrant and titrant. In between titrant and titrant, there is a formation of complex. Based upon the complexation reaction between the complexing agent as a titrant, mostly it is a EDTA. That's why complexometric titrations are also known as a EDTA titrations. EDTA मतलब क्या? Ethylene diamine tetrasterase. By using a indicator, और जो इंडिकेटर इसमें यूज होते हैं, they are known as a metallochromatic indicator. So indicators used in the complexometric titrations known as a metallochromatic indicator, or also known as a PM indicator. PM मतलब metallochromatic indicator. इसके ऊपर GPAT में भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. ऑलरेडी क्वेश्चन GPAT में आ चुका है. The indicators used in the complexometric titration, that is known as a metallochromatic indicators or PM indicator. ठीक है. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ इंडिकेटर. मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ इंडिकेटर. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, है ना, आयोडीन हो गया,
So most of the indicator used in the oxidation reaction or most of the indicator used in the redox titration, they are a self indicator रहेंगे वो. और कॉम्प्लेक्सोमेट्री में कौन से मेटल क्रोमेटिक और पीएम इंडिकेटर है ना. तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है रिएक्शन का कॉम्प्लेक्सोमेट्री के, जैसे यहाँ पे साइनाइड आयंस एंड सिल्वर आयंस. अब मैं नोट किया बनगा सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा. अगेन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. So the titration involving precipitation reaction. जो टाइट्रेशन में precipitation reaction as a reaction होता है उसमें precipitation titration, also known as a argentometric titration. Precipitation titration also known as argentometric titration. Precipitation of ion by using a precipitating reagent or agent. जैसे यहाँ पे देखो सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस है, क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बनेगा प्रेसिपिटेट. तो द titration of this kind of titration involving the precipitation reaction known as a precipitation titration or argentometric titration. ये टाइप्स है titration. नाउ फिफ्थ टाइप है आपका नॉन एक्वियस टाइट्रेशन by using non aqueous titrant. से फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली है परक्लोरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड. परक्लोरिक एसिड होता है, सोडियम मिथॉक्साइड यूज होता है. नॉन एक्वियस टाइट्रेशन. वी आर गोइंग टू सी ऑल द टाइट्रेशन इन द डिटेल्स. जैसे मैंने बोला है यहाँ पे है ना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आज देखें अभी चल रहा है अपना, आज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, उसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री है, उसके बाद में आपका अर्जेंटोमेट्री मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, उसके बाद में नॉन एक्वियस है. यह सब अपन वन बाय वन देखने वाले. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है इसके ऊपर, राइट. सो क्या क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, व्हाट इज मीन बाय बेस, व्हाट इज मीन बाय एसिड एज पर द पर्टिकुलर थ्योरी. तो आपको मोस्टली जो एसिड बेस थ्योरीज है, हाउ यू कैन डिफाइन एसिड और बेस, acid base concept, acid base theories. So Arrhenius theory is there one, then Lowry Bronsted theory or Bronsted Lowry theory, Lowry Bronsted बोलते हैं उसको. Then Levy's theory is there, then Sanovich theory is there, and then Lux-Fluor concept. Most of the books they have given only 3 theories. अगर आप बुक्स में जाओगे and your teacher might also have taught you only 3 theories. तो आप जब कॉलेज में पढ़े होंगे एनालिसिस, तो in that you might have heard Arrhenius theory, you might have learned Lowry Bronsted theory, you might have learned Davis theory, but you might don't know Sanovich theory and you might don't know Lux-Fluor concept. है ना. So one by one, according to the Arrhenius theory, what do you mean by acid, what do you mean by base? According to the Bronsted Lowry, what do you mean by acid, what do you mean by base? ना लेविस के अकॉर्डिंग क्या एसिड है क्या बेस है, सैनोविच के अकॉर्डिंग क्या एसिड है क्या बेस है, वो अपन देखेंगे. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory, what is acid? So acid is a substance dissolved in the water will produce hydrogen ion, will produce H plus ion. So a substance which produces the H plus ion in acid, water known as acid, है ना. तो according to the Arrhenius, acid is a proton, है ना. Acid means what? Acid means those which produces the proton in water, and base मतलब क्या? Base means which produces the OH ion when dissolved in the water. So acid produces H plus and base produces OH minus ion, है ना, when dissolved in the water. According to Arrhenius theory, drawback है इसका कि this theory doesn't hold in a non-aqueous solvent. This theory doesn't applicable for non-aqueous. ये Arrhenius theory. उसका example देखो आप. What do you mean by acid? Acid is a compound which produces the H plus ion. Say hydrochloric acid when dissociated in the water, the H plus will and Cl minus will be there. जैसे H2SO4 है आपका, when dissolved in the water it will produce
H plus and SO4 minus. Acetic acid dissolved in the water, so will produce this H plus and acetate ion. So what do you mean the base? Base मतलब क्या है? That will produce a OH minus ion in the water. So sodium hydroxide will dissolve in the water in A plus OH minus. Ammonium hydroxide in ammonia plus OH minus. Lithium hydroxide, lithium ion plus OH minus ion. So according to the Arrhenius theory, H plus है ना, those compound which gives H plus ion when dissolved in the water will be acid, and those which will give you OH minus ion in the water, that is a base. So simply क्या है कि acid is a H plus ion donor. The compound which produces the H plus is acid, and the compound which produces the OH minus the base according to the Arrhenius theory. ठीक है, तो ये तो आपको इजी है, ये तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये इजी है, सबको मालूम है कि एसिड मीन्स दैट विल गिव यू H plus ion in the water, बेस मीन्स दैट विल गिव यू OH minus ion. बट क्वेश्चन आता है आपको इन दोनों के बीच में, क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं दोनों. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस? According to the Lowry-Bronsted theory, so this theory was proposed by Bronsted and Lowry in 1923. What is acid? According to this theory, acid is a proton acceptor. Acid is a proton acceptor and base is a proton donor. जो H plus देता है, प्रोटॉन मतलब क्या है? H, तो हाइड्रोजन आयन देता है उसको एसिड बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन देता है उसको बोलेंगे बेस. मतलब इनके अपोजिट है, अर्नेस थ्योरी के अपोजिट. सो अकॉर्डिंग टू द लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड बेस इज अ प्रोटॉन डोनर विदाउट एक्वियस मीडिया, मतलब विदाउट वाटर. विदाउट वाटर, दोज कंपाउंड विच विल गिव यू हाइड्रोजन नोन एज अ बेस, विच विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन नोन एज अ एसिड. यहाँ पे देखो एसिड्स एग्जांपल, ये Cl हाइड्रो HI मतलब हाइड्रो आयोडाइड एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड के एग्जांपल है एज पर द लॉरी-ब्रॉन्स्टेड. बेसिस क्या है? Cl माइनस आयोडीन H2SO4 माइनस. अभी देखो कॉन्जुगेट जो है ना, देखो एक ने क्वेश्चन पूछा था कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. अभी देखो H2SO4, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे दैट विल गिव H प्लस एंड SO4 माइनस, है ना. तो देखो H प्लस हो गया एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया SO4 माइनस, है ना. H2SO4 को वाटर में डालेंगे, जैसे यहाँ पे है ना, H2SO4 को दिया मैंने, H2SO4 will produce a H plus and SO4 minus. H plus is a acid character and उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा O and SO4 minus. अगर जैसे रिएक्शन मान लो कि NaOH plus H2SO4, तो H plus देगा एसिड एंड OH माइनस देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो H plus एंड OH माइनस का वाटर बन जाएगा, है ना. बट जो है ना Na प्लस रहेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, है ना. SO4 माइनस जो रहेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, लाइक दैट. ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है. नाउ थर्ड थियरी इज नथिंग बट द लेविस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, है ना, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. देखो यहाँ पे क्या है, आरएनएस में acid is a H plus ion, acid will produce H plus ion and base will produce OH minus ion in a water according to the Arrhenius theory. According to the Lowry-Bronsted theory, acid is a proton acceptor, base is a proton donor without water medium, without aqueous medium. According to the Lewis theory, acid is a electron pair acceptor, यहाँ पे electron pair है acceptor, and base is electron pair donor. बस
लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करना है बस, क्योंकि लोरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है, एसिड इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और लेविस क्या कहता है, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बाकी बेस तो उसके ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस इज अ प्रोटॉन डोनर, यहाँ पे बेस इज अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पे लेविस एसिड कौन है ना, बोरान ट्राइफ्लोराइड, जैसे एक रिएक्शन है BF3 प्लस NH3 NH3 BF3, BF3 क्या कहेगा, BF3 will accept the electron pair from NH3 है ना, that's why BF3 is acid, BF3 क्या रहेगा एसिड, नहीं NH3 क्या रहेगा बेस। BF3 will accept the electron pair from NH3 and forms a covalent bond, थ्योरी का कंसेप्ट ही ऐसा है कि acid is a electron pair acceptor and base is a electron pair donor. Acid is a electron pair acceptor, base is a electron pair donor, है ना, to form a covalent bond, to form a covalent bond. तो acid, ये acid है, ये base है। Acid is a electron pair acceptor. रिएक्शन, तो रिएक्शन किसके बेसिस पे होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेशन इसके बेसिस पे होता है। तो NH3 is electron pair donor known as base, BF3 is electron pair acceptor known as acid, and that's why formation of this form a covalent bond. Now Sanovich theory है नया है 1934 में। Sanovich U साइलेंट होता है, Sanovich में यह है। What is acid according to the Sanovich theory? Acid is any species that react with the base, है ना, by giving a cation or accepting the anion or electrons. Sanovich क्या कहता है कि what is acid? Acid is a compound, है ना, which react with the base by giving up a cation. जब एक कंपाउंड है ना, एसिड किसको बोलेंगे according to the Sanovich theory? So acid is a species that react with the base by giving cation or by accepting the anion or electrons. तो उसने कैटायन देना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन और एनायन एक्सेप्ट करना चाहिए। व्हाट इज बेस? बेस इज द स्पीसीज दैट रिएक्ट विद द एसिड देयरबाय गिविंग, ये क्या करेगा, इट विल गिव यू एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट द कैटायंस अकॉर्डिंग टू द Sanovich theory. Acid is a compound that react with the base by producing cation or by accepting the anions or electrons. Base is the compound that react with the acid by giving anions or electrons and by accepting the cations. यहाँ पे देखो एग्जांपल Fe डबल प्लस, इसको बोलेंगे बेस, which acts as a base. Fe डबल प्लस is converted into Fe ट्रिपल प्लस, एसिड और ऑक्सीडाइजिंग प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Fe2 प्लस, है ना, ये क्या होगा, Fe2 प्लस स्पॉन्टेनियसली विल बी कन्वर्टेड टू 3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो Fe2 प्लस को रिड्यूसिंग एजेंट और बेस बोलेंगे, Fe3 प्लस जो है वो उसको एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइकवाइज दैट Ce ट्रिपल प्लस, है ना, इसको बेस और रिड्यूसिंग एजेंट, Ce4 प्लस ऑक्सीडाइजिंग। लास्ट कंसेप्ट है लक्स फ्लड कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है लक्स फ्लड कंसेप्ट, ये तो नाम भी नहीं सुना होगा, तो दैट इज नोन एज अ लक्स फ्लड कंसेप्ट। क्या है, 1929 में ये थ्योरी प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू द लक्स फ्लड कंसेप्ट, व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एंड बेस इज द ऑक्साइड आयन डोनर। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन
मैग्नीशियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना, तो ये बनेगा मैग्नीशियम है ना सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड प्लस है ना, तो जो ऑक्साइड एक्सेप्टर है उसको एसिड बोलेंगे, जो ऑक्साइड डोनर है उसको बेस बोलेंगे. लक्स ब्लड कंसेप्ट, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड will form a calcium sulfate. So oxide donor, oxide acceptor. Acid is a oxide acceptor, base is a oxide donor. RNAs में क्या है ना, a substance will give you H plus in the water known as acid. A substance which will give you OH minus in the water known as the base. Laurie Bronsted, acid is a proton acceptor, base is a proton donor. According to the Lewis, acid is a electron pair acceptor and base is the electron pair donor. According to the Sanovich, acid will react with the base by giving cation or by accepting the electrons and anion. What is base? Will react with the acid by giving the anions or electrons or by accepting the cations. Lux blood concept, acid is oxide ion acceptor, base is oxide ion donor. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. आरएनएस के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको, बट लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली पूछेंगे. अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी बेस इज डिफाइंड एज, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे. नीचे आएगा है ना, नीचे ऑप्शन में आएगा ऑप्शन ए है ना, प्रोसेस द OH इन वाटर. सेकंड ऑप्शन आएगा कि प्रोटॉन डोनर. थर्ड ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और चौथा ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, राइट. तो ये you have to remember these theories according to the RNA's theory. What is base, what is acid, according to the Laurie Bronsted, according to Lewis theory, according to the Sanovich theory, according to the Lux blood concept, what is acid and what is base. इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हो, जैसे ना कि RNA's theory H plus ना H2O that is acid है ना, OH minus in water that is base. यहाँ पे क्या है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर एसिड, प्रोटॉन डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस. यहाँ पे क्या है, एसिड will produce a cation and accept the anion or electrons. Base will donate the anion or electrons and accept the cation. Like that. In short में भी आप कर सकते हो, right? Arrhenius theory, Bronsted, Laurie theory, Lewis theory, Sanovich theory and Lux blood concept. ठीक है. Now classification of acid or bases according to the pKa and pKb. pKa क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है फॉर एसिड. pKb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. नाउ तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कभी कभी क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है. तो व्हाट इज द pKa फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? pKa, तो pKa लेस देन 0 है ना, pKa लेस देन 0 अगर है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जाम्पल क्या है, परक्लोरिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड और HCl. ऑल दिस आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इनका pKa ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन 4.5 है ना. 4.5 के कम pKa है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का है स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड मीन्स दोज एसिड हैविंग pKa लेस देन 9.5. एग्जांपल इज योर एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड. एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो ये वीक एसिड हो गया. वेरी वीक एसिड किसको बोलेंगे, वेरी वीक एसिड, तो वेयर pKa is more than 9.5. K is more than 9.5. For example, phenol. Phenol is a very है ना, phenol is a very weak acid and H2O मतलब हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड.
दैट इज ऑल्सो वीक, वेरी वीक एसिड. नाउ स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? वेयर पीकेबी इज मोर देन, पीकेबी इज लेस देन 4.5. तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बेस का है उसका 4.5 से कम होना चाहिए. NaOH वेरी, है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. वीक बेस किसको बोलेंगे? इसका पीकेबी 9.5 से कम है. एग्जाम्पल इज अमोनिया. वेरी वीक बेस किसको बोलेंगे? तो व्हिच पीकेबी इज मोर देन 9.5. एग्जाम्पल एसिटामाइड एंड. तो वीक एसिड, वीक बेसिस, है ना. पीएच के अकॉर्डिंगली अलग है. पीएच के अकॉर्डिंगली क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या रहेगा? लेस देन 3, है ना. वीक एसिड का पीएच क्या रहेगा? 3 to 7, है ना. स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या रहेगा? 11 to 14. और वीक बेस का पीएच क्या रहेगा? है ना, 7 to 11, लाइक दैट. नाउ इंडिकेटर. तो indicators used in the acid base titration, ना. तो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर यूज्ड इन द एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ फिनोप्थैलीन. तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन सा है? फिनोप्थैलीन. फिनोप्थैलीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर. याद रखना, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज फिनोप्थैलीन फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन. बट अदर इंडिकेटर्स आर यूज्ड, जैसे थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, ना, थाइमोल ब्लू. व्हेन एसिड एनवायरनमेंट में इसका कलर क्या हुआ? इन द एसिड एनवायरनमेंट थाइमोल ब्लू हैज अ रेड कलर, बट as soon as neutralization is there and pH of that solution changes to basic, so it will turn into yellow. मतलब थाइमोल ब्लू इनिशियली एसिड एनवायरनमेंट में रेड कलर का था, बेस में जाने के बाद में येलो होगा. तो कलर चेंज फ्रॉम रेड टू येलो. मिथाइल ऑरेंज, ना, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर होता है इसका एसिड में, और जब बेस में जाएगा तो ऑरेंज होगा. मिथाइल येलो, रेड कलर इन एसिड, येलो कलर इन द बेस. ब्रोमोफिनॉल ब्लू एंड ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, ये दोनों जो है ब्रोमोफिनॉल एंड ब्रोमोक्रिसॉल, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, both are having yellow color in the acid medium, both are having blue color in the basic medium. That's how color changes. Ethyl red has a red color in the acid and yellow color in the base. Phenol red, yellow in the acid, red in the base. So these are the indicators, है ना. indicators कभी कभी क्या है कि और इसमें एक points you can read one extra point, indicator range, है ना. If you want to read more, you can also read indicator range. इंडिकेटर रेंज के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको निकाल के वो नेक्स्ट इसमें दूंगा. इंडिकेटर रेंज. नाउ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. दीज आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर योर टाइट्रेशन. यहाँ पे पूरा टाइट्रेशन ही मैं ले रहा हूँ आपको, जैसे सेमेस्टर में है वैसे ही ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा सुपरफिशियल जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से. Solubility product. What is solubility product? So it is a product of concentration of ion increased to a appropriate range in a saturated solution. ये क्या है? solubility product क्या है? It is a product of concentration of ions. जो ions है एक saturated solution में ions, है ना. It is a product of concentration of ions increased to appropriate range in a saturated solution at a constant temperature. ये याद रखना है आपको. What is solubility product? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको. What is solubility product? So product of concentration of ions increased to a appropriate range in a saturated solution at a constant temperature, and solubility product is mostly for poorly soluble salt. जिसका solubility कम होता है उसके लिए होता है. Mainly for sparingly soluble salt formed by acid and base reaction. तो acid base reaction में salt बनता है, अगर वो poorly soluble है
तो उसके लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो उसका सोलिबिलिटी बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग द बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फॉर ए रिएक्शन ए बी है ना, एक कंपाउंड ए बी वो डिसोसिएट होकर क्या देगा, ए प्लस बी प्लस। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अ KSP है ना, उसको बोलते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो ए प्लस इंटू बी प्लस, मतलब जो आयंस है उनका प्रोडक्ट है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड ना। तो ए बी जो है ये कंपाउंड है, डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, दो आयंस बनेंगे ए एंड बी प्लस। उसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, KSP इज इक्वल टू ए है ना प्लस इंटू बी प्लस। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि इसके बाहर का कुछ नहीं आता। मैक्सिमम दे कैन आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। दैट्स इट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions increased in an appropriate range in a saturated solution at a constant temperature, mainly for sparingly soluble salt which are formed by acid base reaction. सेकंड आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों ही साइड में कॉमन आयन रहेगा। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में एक आयन एंड राइट साइड में आयन, वो कॉमन रहेगा। तो एडिशन ऑफ अदर कंपाउंड containing a common ion with the salt to the solubility product causes the precipitation of the salt because of the solubility initially exceeded and shift the equilibrium because of the addition of ion already present in the equilibrium solution. कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या ना, एडिशन ऑफ कॉमन आयन causes the precipitation है ना। तो एडिशन ऑफ अनदर कंपाउंड कंटेनिंग कॉमन आयन, आपको एक रिएक्शन चल रहा है उसमें क्लोराइड आयन, आपका एक रिएक्शन चल रहा है उसमें क्लोराइड आयन ऑलरेडी है। एडिशन ऑफ अनदर कंपाउंड हैविंग क्लोराइड आयन टू द सॉल्ट of solubility product will cause precipitation of the salt। क्यों होता है, because KSP मतलब क्या, आपका solubility product initially exceeded and shift the equilibrium because of the addition of ion already present in the equilibrium solution। तो इसका यहाँ पे समझ में आएगा आपको by taking the example। जैसे सिल्वर क्लोराइड क्या है, it is a salt। Silver chloride will dissociate into silver Ag plus and Cl minus, right। अभी ये सिल्वर क्लोराइड है, उसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, Ag plus into Cl minus, that's it। Now addition of sodium chloride in the silver chloride solution shift the equilibrium and causes the precipitation of silver chloride due to added common chloride ion। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता है जब, है ना, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जिसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसमें क्लोराइड है, जैसे मान लीजिए AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड इज अ कंपाउंड, व्हेन इट इज अ डिसोसिएटेड इट प्रोड्यूसेस द क्लोराइड आयन Ag plus and Cl minus। तो Ag plus Cl minus क्या है, इट इज अ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। नाउ इफ यू ऐड सोडियम क्लोराइड में भी क्या है, क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएशन होने के बाद में Na plus Cl minus देगा, तो Cl minus क्या करेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा एंड लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, उसको प्रेसिपिटेट करेगा किसको, सिल्वर क्लोराइड को, नोन एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, नोन एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट।
तो मतलब जैसे एसिड बेस का रिएक्शन होता है, में जो सॉल्ट बनता है उसको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है ना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, जब बनता है तो कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये Cl and NaOH ये बेस है, ये एसिड, when acid and base react it will give you a salt NaCl along with the H2, this is known as a hydrolysis of salt है ना। मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ वाटर with the salt by reaction of acid and base है ना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर with the salt है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर with the salt by reaction of acid and base, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है ना। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस यू विल गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद द वीक बेस यू विल गेट एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, व्हेन वीक एसिड विल रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग है उसका सॉल्ट बनता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा और दोनों वीक है न्यूट्रल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस विल गिव यू एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग है ना, देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल give you basic salt, weak acid weak base will give you neutral salt. Now buffer solution, what is buffer solution? Buffer solution is the solution that can resist the pH change, that can prevent the pH change. Buffer solution किसको बोलते हैं, the solution which can prevent or which can resist the pH change upon addition of small amount of acid or base. Buffer solution is the solution which prevents or resist or prevent the pH change upon addition of small amount of acid or base. Now ये buffer कैसे बनता है, it is composed of a weak acid and its conjugate base, weak acid and its conjugate base, or weak base or its conjugate acid, weak base or its conjugate acid ना। जैसे मान लीजिए एक बफर है आपका कौन सा, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, इज वन एग्जांपल, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। सो एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट मतलब एसिटिक एसिड है तो उसका ही सॉल्ट क्या है, सोडियम एसिटेट है ना। तो एसिटिक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो सोडियम एसिटेट इज अ कॉन्जुगेट बेस। जब सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन होगा तो क्या बोलेगा, सोडियम Na प्लस एसिटिक एसिड है ना। तो सोडियम एसिटेट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम अमोनिएट, sodium ammoniate is a conjugate base of ammonium hydroxide. Sodium ammoniate is a conjugate acid of ammonium hydroxide. Buffer capacity is nothing but the ability to prevent the pH change. Buffer capacity क्या होता है, it is the ability of buffer to resist the pH change. Buffer capacity, ability to prevent the change in the pH. It is given by, buffer capacity is given by B is equal to dN divided by dpH. dN क्या है, dN is the number of moles of acid or bases added. dN है ना, dN मतलब number of moles of acid or base added to a solution. dpH मतलब change in the pH. बफर सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इज बफर सॉल्यूशन
the solution which will reduce the pH change upon addition of small amount of acid or base. Buffer is nothing but it is made from either weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid. एग्जाम्पल ले एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम अमोनिएट. एक लास्ट ईयर जीपीएट में एक क्वेश्चन आया था, द मोस्ट कॉमन बफर इन द ह्यूमन बॉडी और लार्जेस्ट बफर इन द ह्यूमन बॉडी, सब कुछ आया था. कॉमन मोस्ट कॉमन बफर इन द ह्यूमन बॉडी, तो यही है ना, है ना, ये मोस्ट कॉमन बफर इन द ह्यूमन बॉडी क्या है फिर? कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, वो फिजियोलॉजिकल बफर है. ये बफर तो अपना केमिस्ट्री में चलता है. नाउ इक्वेशन, Henderson-Hasselbalch equation is used to predict the Henderson-Hasselbalch equation is used to measure the pH of acid and base, dissociation of acid and base. For that, Henderson-Hasselbalch equation is used. Henderson-Hasselbalch equation is used to measure the pH. For acid, क्या equation है ना? pH is equal to pKa plus log of A minus divided by HA. मतलब क्या? A minus क्या है? anion divided by HA मतलब conjugate base. For base, pH is equal to pKb log of HB divided by B minus. To calculate the pH, pH क्या है? P है ना, pH is है ना, P is equal to pH है ना, pH is equal to है ना, वो होता है एक इक्वेशन 14 वाला इक्वेशन might have in the 12th है ना, pKa है ना, pKa is equal to pH is equal to negative log of हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो वो 14 होता है. तो ये यहाँ से आता है Henderson-Hasselbalch इक्वेशन. आपको उसमें जाना नहीं, आपका काम का क्या है, ये याद रखना चाहिए. व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज Henderson-Hasselbalch इक्वेशन इज यूज्ड टू मेजर द पीएच, दैट्स इट. अभी यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका टाइट्रेशन कर्व्स, एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन इन एसिड बेस एंड टाइट्रेशन कर्व्स. कितने टाइप के टाइट्रेशन है? टाइट्रेशन कर्व. There are 4 type of titrations in the acid base. So, titration of strong acid with the strong base, titration of weak acid with the strong base, titration of weak base with the strong acid, and titration of weak acid with the weak base. तो 4 टाइप के टाइट्रेशन है. पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग है ना, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, तीसरा है आपका है ना वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा है वीक एसिड विद वीक बेस. देयर आर 4 टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन द एसिड बेस टाइट्रेशन. पहला टाइट्रेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसोसिएट कंप्लीटली इन अ वाटर. जब स्ट्रॉन्ग एसिड आप वाटर में डालोगे, दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, दैट विल प्रोड्यूस आयंस कंप्लीटली एंड विल गिव यू H+ आयन व्हिच इज देन न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या है? वो OH- प्रोड्यूस होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है? ये H+ देगा. H+ OH- एक में को न्यूट्रलाइज करेंगे है ना. So strong acid will dissociate completely and produce H+, which is neutralized by OH- produced by strong base. Now, at the equivalence point, मतलब है ना, जितना अमाउंट एसिड का है उतना ही अमाउंट का बेस आपने डाला है फ्लास्क में, क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा. लेकिन एक ही बार में नहीं डालते हो आप, यू आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप. जैसे मान लीजिए कि एसिटिक है, जैसे H2SO4 डाल दिया, HCl डाल दिया, HCl के
आगे इसमें आप NaOH का सोल्यूशन ऐड कर रहे हो तो एकदम ही ऐड नहीं करोगे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, राइट। तो जितना H प्लस एसिड ने दिया है उतना न्यूट्रलाइज करने के लिए OH आएगा कहाँ से, बेस से। So at the equivalence point H plus are completely neutralized by OH minus ion. That is between P plot the plot between pH of the solution and volume of titrant. The plot between pH, ये देखो यहाँ पे क्या है, y axis के ऊपर pH है, plot between pH of solution and volume of titrant is known as a titration curve. इसको अपन क्या बोलते हैं, titration curve. The plot between pH of the solution and volume of titrant is known as a titration curve. In the plot, initially what happens? Initially in the plot there is a slow increase in the pH. क्यों? क्योंकि एसिड फ्लास्क में है और ऊपर से आप बेस ऐड कर रहे हो तो pH क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो स्लो इंक्रीज इन द pH and at the end point there is a sharp increase in the pH. मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे, है ना, कुछ करो ऐसा शार्प इंक्रीज होता है pH, बाद में pH बढ़ता है। तो दिस इज एंड पॉइंट, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। So now equivalence point of what will be the equivalence point of titration of strong acid with the strong base? तो strong acid strong base का titration में equivalence point क्या रहेगा? तो obviously equivalence point is at a pH 7. So equivalence point is at a pH 7 for strong acid strong base. In the titration of strong acid strong base, equivalence point is at a pH 7. इक्विवेलेंस पॉइंट बोलो या फिर आप उसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज एट अ pH 7, ठीक है, pH 7। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का एग्जांपल क्या है, टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH। और इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आया है GPAT 2024 में, आइडेंटिफाई द टाइट्रेशन कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व्स व्हिच बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपको ऐसे कर्व दिए थे, दे हैव गिवन 4 कर्व्स और उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द व्हिच कर्व इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। So that's why I am taking this. So titration curve for strong acid strong base is like this, है ना। ये क्या है, इनिशियली pH, है ना, थोड़ा सा यहाँ से चालू करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इनिशियली pH ऐसा ऐसा बढ़ेगा, बाद में ऐसा। तो ना क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनिशियली pH कम ही होगा ना, 0.1 या 2 या 3 होगा। So initially pH is acidic and once you started adding the sodium hydroxide in that, pH will increase slightly, slowly, but at a equivalence point there is a neutralization completely. यहाँ तो pH है ना नहीं है, फिर बाद में beyond the equivalence point pH will increase sharply like that. So that is a curve for strong acid strong base titration. Now titration of weak बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस कौन सा है, वीक है। तो वीक बेस विद इंडिकेटर इज टाइट्रेटेड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। द प्लॉट ऑफ pH एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट विल शो इनिशियल डिक्रीज इन द pH, initial decrease in the pH and at the equivalence point it show rapid pH drop. weak base है ना, weak base अपने फ्लास्क में लिया है
तो उसका पीएच कितना रहेगा, अराउंड 7 to 10 रहेगा, है ना, ये 7 to 10 रहेगा यहाँ से। वंस यू स्टार्टेड एडिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, इनिशियली पीएच क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, इनिशियली देयर इज डिक्रीज इन द पीएच at equivalence point. When equivalence point will come, after that there is a sharp decrease in the pH. That is known as a titration curve for weak base with a strong acid. ठीक है, तो है ना, है ना, when weak base is titrated with a strong acid, plot of pH and volume of titrant show initial decrease in the pH, and at the end point it show rapid pH drop, है ना, and remains constant after completion of reaction. So what is the equivalence point over here? The equivalence point for weak base strong acid titration is less than 7, है ना, equivalence point का pH कितना है, less than 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है, weak acid है, वीक बेस है, एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, तो पीएच इक्विवेलेंस का कम ही रहेगा, लेस देन 7, ठीक है। एग्जांपल इज NH3 प्लस HCl, है ना, NH3 क्या है, इट इज अ वीक बेस, NH3 इज अ वीक बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू एसिडिक सॉल्ट, यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। तो थर्ड टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नथिंग बट द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद द strong base, titration of weak acid with the strong base. यहाँ पे weak acid is not completely dissolved, it is a partially dissociated. weak acid है तो partially dissociate होगा H plus ion में, which are neutralized by OH minus produced by strong base. The plot between pH and volume of titrant again is a titration curve for weak acid and weak strong base, है ना। After addition of strong base, what will happen? weak acid है तो pH क्या रहेगा उसका, ऑलरेडी कम रहेगा, दैट्स व्हाई देखो यहाँ से स्टार्ट हो, weak acid का pH कितना रहेगा, मोर देन 3 to more than 3 से आगे रहेगा, दैट्स व्हाई कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, एंड addition of base it will show increase in the pH, at the end point it show rapid increase in the pH, एंड पॉइंट के बाद में pH ज्यादा बढ़ेगा। तो इक्विवेलेंट पॉइंट क्या रहेगा, एट इक्विवेलेंट पॉइंट pH कितना आएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट का pH रहेगा मोर देन 7, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड वीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट इज मोर देन 7। एग्जांपल इज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रोड्यूस बेसिक सॉल्ट, तो ये करोगे। फोर्थ टाइप ऑफ टाइट्रेशन वीक एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, वीक एसिड partially dissociated and neutralizes by weak base, ये एग्जांपल है ना, एसिटिक एसिड एंड अमोनिया, तो weak acid weak base will produce neutral salt and equivalence point will be at a 7 pH, equivalence point will be at a pH 7, है ना, तो ये स्लोली जाएगा क्योंकि यह है ना, weak acid weak base का टाइट्रेशन कर्व है, स्लोली जाएगा, इट विल प्रोड्यूस अ कर्व लाइक दिस, एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH कितना रहेगा, 7 रहेगा, है ना। These are the types of titrations in the acid base. नेक्स्ट क्या रहेगा, there are two type of method, टाइट्रेशन में दो मेथड है, एक तो है डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड एंड एक होता है बैक टाइट्रेशन मेथड और रेसिडुअल टाइट्रेशन मेथड, इसको रेसिडुअल बोलते हैं, इसको ही बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड रेसिडुअल टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, तो प्री-वेड सैंपल इज डिसॉल्व इन द वाटर, वो एक पर्टिकुलर वेट का सैंपल, प्री-वेड सैंपल इज डिसॉल्व इन द वाटर सो दैट द फाइनल सॉल्यूशन, जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, इज मोर और लेस है ना, इज मोर और लेस एट द सेम इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ एसिड यूज्ड, है ना। जब आप
एसिड है ना, तो मान लीजिए वो 1 मोलर एसिड, तो उसका जो है ना प्री वेट सैंपल, मतलब मान लीजिए कि 44 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ वाटर, वो बनेगा 1 मोलर है। 1 मोलर आपको मालूम है प्री वेट सैंपल है ना, so that the final solution will be more or less the same equal। तो आप जब एसिड यूज करेंगे तो वो भी 1 मोलर का एसिड प्रिपेयर करके बनाना पड़ेगा। प्री-वेट sample dissolved in the water so that the final solution is more or less to the same equivalent concentration as that of the acid used in the titration। उसके बाद में इंडिकेटर ऐड करना है, that will give you color change at the completion of reaction। एग्जाम्पल क्या है इसके, सोडियम कार्बोनेट, sodium hydroxide, tartaric acid and pure sulfur। These are the compound and drugs titrated by direct titration method। sodium carbonate, sodium hydroxide, tartaric acid and pure sulfur। Now back titration or residual titration क्या होता है? Sample is again dissolved in a accurately measured quantity of standard solution, known concentration। तो sample है उसका concentration है ना, sample is dissolved in the accurately measured quantity of standard solution, known concentration, which is present in the excess। यहाँ पे excess रहेगा, मतलब क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो एक्सेस रहेगा, आपका जो सैंपल है वो प्रीवेड रहेगा। प्रीवेड सैंपल आपको एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है ना, तो वो जो सैंपल है वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा, है ना, बट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने एक्सेस में डाला है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज्यादा है। नाउ द रिमेनिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विल बी बैक टाइट्रेटेड विद द एसिड, है ना, ऐसा। सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन द accurately measured quantity of standard solution having known concentration which is present in the excess, and now subsequently titrating the unreacted standard solution with another previously standardized solution, the back titration or residual titration। रेसिडुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो कंपाउंड है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डाला है आपने, वो तो रिएक्ट हो गया, बट आपका सॉल्यूशन ज्यादा था तो सॉल्यूशन बचा है, जितना रिएक्ट हो गया उतना हो गया, है ना, जो बचा है उसको टाइट्रेट करना है, दैट्स व्हाई बैक टाइट्रेशन और रेसिडुअल टाइट्रेशन। तो ऐसे ऑफ जिंक ऑक्साइड एस्पिरिन टैबलेट का ऐसे इट इज डन बाय बैक टाइट्रेशन और रेसिडुअल टाइट्रेशन मेथड। नाउ रेसिडुअल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन क्यों करना है? रेसिडुअल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन इज डन व्हेन रिएक्शन इज रादर स्लोली। जब रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसमें बैक टाइट्रेशन प्रेफर करते हैं। व्हेन रिएक्शन इज स्लजिश और स्लोली बैक टाइट्रेशन इज प्रेफर्ड। व्हेन सैंपल फेल्स टू गिव अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट विजिबल एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट शार्प नहीं होता है तब उसका बैक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, तो किसमें डिटर्मिनेशन ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स क्या है, एक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बार्बिट्यूरेट्स, तो उसमें मैं मिथेनॉल में सैंपल क्या करना है, डिसॉल्व करना है। मिथेनॉल एंड वाटर में बार्बिट्यूरेट को डिसॉल्व करके दे आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? बिकॉज बार्बिट्यूरेट्स आर द वीक एसिड्स। Barbiturates are the weak acids, so they are titrated against the base using a nizarine as an indicator for barbital and a thymophthalin for phenobarbital, methylaurine indicator for thiopental sodium, right? Again determination of nicotinic acid है ना, इसमें भी ये acid based titration applicable है। titrated against the sodium hydroxide using phenolphthalein indicator। applications और क्या है, determination of amino acids, then assay of per iodates benzoic acid, इसमें ये applicable है, right? So this will end your acid based titration। acid based titration में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी,
जैसे कौन से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्शियरी स्टैंडर्ड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में इंडिकेटर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपका टाइट्रेशन कर्व्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द आर्नेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द सैनोइज थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लक्स ब्लड कंसेप्ट। तो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके। So remember the titration curve, remember titration curve, okay? Then remember the definitions of acid and base, the acid base theories, remember the primary standards, है ना। ये तीन चार चीजें के लिए, तीन चार चीजों के लिए अपने को पूरा चैप्टर देना पड़ा। मतलब ये चैप्टर हो गया ना आपका पूरा, भी सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, तो थोड़ा सा शॉर्ट में है, नहीं तो अदरवाइज फिर आपके कॉलेज के सेमेस्टर के टीचिंग में और मेरे में क्या फर्क है, राइट। So we have seen the introduction, then we have seen the acid base titration. So tomorrow there will be one lecture on YouTube for all of you and also for other public. So question and answer, MCQs will be discussed tomorrow, and day after tomorrow we'll discuss the non-aqueous titration, है ना। कल आपके लिए नहीं, सबके लिए लेक्चर होगा, और परसों सिर्फ आपके लिए होगा, ये आज का भी सिर्फ आपके लिए था। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर फोन कर सकते हो। और एक बार बोलता हूँ आपको, इंडिकेटर थ्योरी, एसिड बेस कंसेप्ट, देन टाइट्रेशन कर्व्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे आर इंपॉर्टेंट, इसके बाहर कुछ नहीं आता।